Hello, students. Once again, I welcome you all to the session on literary analysis of editorials. I'm Shazli, and I'm actually quite excited. I should rather say that I'm actually bouncing off the wall, considering that it's going to be a good learning. We are going to learn a lot of new vocabulary. We are going to learn a lot of grammatical rules in our sessions around literary analysis of editorials. So, before I begin with this, I just would like to initiate. Let's have this rapid rundown of the titles and the genre. Hello. Okay, so यहाँ देखिए students, like the titles in a tough world, the beacon of UK, India strategic ties. यहाँ पे ये जो मैरीटाइम स्पेस है उसके बारे में बात करिए कि यूके एंड इंडिया के किस तरह के टाइज हैं, ऑल राइट, एंड हाउ कैन वी स्ट्रेंथन देम. So that's exactly around geopolitics. Second is it is the conditioning of Agniveer that merits attention. यहाँ पे अग्निवीर का आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स. इट्स अराउंड लाइक ये जो आपका सोल्जर्स का मिलिट्री पीपल का जो भी उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेरी रिक्रूटमेंट, एंड उस बाद में जाके उनमें से कुछ लोगों को परमानेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. बट ऑथर हैज फोरसीन समथिंग कि भाई देयर इज अ ग्लिच इन दैट. टेक्निकली अगर आप टेम्परेरी रखते हैं एंड पीपल वांट टू कंटिन्यू एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, सो ऑब्वियसली वो लेग पुलिंग होती है, वो कोऑपरेशन नहीं रहेगा, एंड कोएजन कोऑपरेशन कंप्लीट ट्रस्ट इज ए मस्ट इन मिलिट्री एंड सो लाइक दैट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, इजंट इट? तो वहां पे अगर लोगों में ट्रस्ट नहीं रहेगा, वहां पर भी अगर पॉलिटिक्स होगी, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जिसे आप कैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ये एक ऐसी स्ट्रीम है, एक ऐसा आई वुड से लाइक एक ऐसी जॉब है जहां पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ज्यादा करते हैं, दे एक्चुअली ब्लाइंडली ट्रस्ट ईच अदर. वहां पे अगर आप इस तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच आर बीइंग प्रेवलेंट देयर, सो दैट्स कंसिडर्ड टू बी completely, I would say that probably will lead to failure. अब देखिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट फ्रंटियर, ये साइंस अराउंड टॉपिक है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशंस में वी हैव बीन डूइंग गुड, इंडिया इज डूइंग ग्रेट इन दैट, एंड ऑथर हैज टॉक्ड अबाउट कि अभी तक गवर्नमेंट जो थी दे यूज्ड टू टेक इनिशिएटिव्स, बट पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी पीपल एक्चुअली कैन गो, बट उसमें कुछ प्रिकॉशंस एंड कुछ सजेशंस भी थे ऑथर के. तो दैट्स अराउंड साइंस. द लास्ट वन इज डेथ ऑफ डिसेंट, ये जियोपॉलिटिक्स है. रशिया में जो रिसेंटली देयर वाज अ पर्सन जो कि अपोजिशन पार्टी को बिलोंग करता था, पुतिन को सपोर्ट नहीं करता था, उसको प्रोटेस्ट करता था, तो उसकी बड़े मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई है इन दी प्रिजन, इम्प्रिजन, लाइक ही वाज इम्प्रिजन्ड देयर इन दी रशियन प्रिजन. तो उसके अराउंड पूरा टॉपिक है और उसमें बताया कि द सिचुएशन इन रशिया इज क्वाइट ग्लूमी. लेट्स सी टाइटल्स, तो हम लोगों ने देख लिया है, जॉनरा वी हैव डिस्कस्ड. तो हाई टाइम दैट वी नीड टू रीड मोर ऑन जियोपॉलिटिक्स, वी हैव टू रीड मोर ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल. अब हम बात करते हैं बच्चा कि आज हम लोग क्या क्या सीखते हैं. आई थिंक contextual vocabulary will be one thing which we will be focusing more in today's session. Phrases, probably a few. Foreign phrases, I haven't found any in today's session. Grammatical concept, I might while reading. Figures of speech, I haven't found any. Idioms, again, like I will explore in the analysis. Let's see. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे contextual vocabulary from in the conditioning of अग्निवीर that merits attention. तो यहाँ पे let's discuss a few words here. Number one, veteran. Veteran कौन होते हैं स्टूडेंट्स? Veteran are those people who have got long experience in a particular field, that they are considered to be veterans. Hi Vedansh. Hello. So veterans students, like we can say, she seems to be veteran in the education industry, or we have seen like Bollywood veterans. All right, action industry, film industry. So there are some veterans which we have. Normally, these veterans get award, life, lifetime achievement award is given to the veterans in different field. So veterans. Now regimentation, regiment से आया है. Regiment exactly क्या होता है students? That is
rule or government. Regimen, matlab you actually have certain rule. The power of ecclesiastical regiment which none but the church should wield. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करा है रेजिमेंट्स के लिए. रेजिमेंटेशन. Hi Ishant, this is your first class. I hope to see you once again in the upcoming sessions. Hi. आज संचित नहीं है because संचित is quite regular in my sessions. So students, आगे देखिए rules regimentation. She got stuck in the outdated regimentation. Regimentation, outdated rules and regulations. So that is regimentations. Now next is cliche. Cliche को hackneyed भी कहा जाता है. Anything which is overly used. All right, a phrase or opinion that is overused and betrays a lack of original thought. All right. यहाँ पे I would say probably for me, you all can I think vouch for it. That Shazli ma'am keeps saying all right, all right, all right. Although I'm trying to overcome this, I'm trying my level best that I should not be using cliche. That is all right. आपने नोटिस करा होगा ना स्टूडेंट्स जैसे आई कीप यूजिंग ऑल राइट सम अदर टीचर माइट यूज सम अदर फ्रेज बार बार एक ही फ्रेज यूज करना एक ही लाइक या बहुत ही कॉमन जैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वी आर डन विद इट isn't it? So यहाँ पे that is considered to be cliche, a phrase or opinion that is overly used. Simple living, high thinking is overly used. Okay? So old cliche that women's place is in the home. ये तो बहुत ही outdated cliche है. Now women are no more a part of family only. I mean, they are family like they are, but obviously not home. Their boundaries are not confined to homes only. They go, they explore world. How many of you have seen girls, women exploring different kind of things in the world? So that's old cliche. And I think males will also appreciate that. अगर मैं बोलूं, like women are considered to be better manager than men. All right, so that's again an old cliche. कुछ चीजों को हम female specific रखते हैं, कुछ चीजों को हम male specific रखते हैं, but they are considered to be old cliches. So cliches are overly used things like overly used phrase, overly used opinion, overly used idea, which we keep using every now and then. इसे हम hackneyed phrase भी कह सकते हैं. The synonym can be hackneyed phrase. Now again with the same topic जो अग्निवीर था जो soldier का मैंने बताया था आप लोगों को assimilation, the process of taking in and fully assimilate. Why don't you assimilate all the information and ideas and do your own research work? So that is assimilation. I think for a good thesis, one needs to assimilate ideas, information, facts around it, and can start using or writing their own thesis. So assimilate. Now, contingent. Contingent students. Thank you so much, Naman. I'm very happy that you're liking the session and you find my sessions quite fruitful. Good. Even like I can see that reflection. पहले मैं लिखती थी know your lexicon. All right. I think starting में I used to come up with this word lexicon. And Naman आपने अपने comment में ये word use करा है and I'm very happy that it's actually worth considering. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एसिमिलेशन की आप निमोनिक अगर देखें तो दैट इज एसिमिलेट से आता है अस्सी ते मिल गए टू बी एब्जॉर्ब घुलना मिलना मतलब यू एब्जॉर्ब समथिंग यू एब्जॉर्ब आइडियाज नॉलेज थॉट्स एंड डू योर ओन गुड रिसर्च सो दैट इज एसिमिलेशन अब कॉन्टिंजेंट के स्टूडेंट्स आई हैव रिटर्न आई थिंक थ्री मीनिंग्स ऑफ कॉन्टिंजेंट तो एक मीनिंग तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है सब्जेक्ट टू अ चांस ऑलराइट समथिंग विच हैपेंस बाय चांस एक्सीडेंटल फॉर्चुइचर्स पॉसिबल अनफोर्सीन वो सारे उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्टिंजेंट नेचर ऑफ अ जॉब मतलब एक्सीडेंटल कि बाय नेचर बाय चांस ऐसा होता है सो समथिंग विच occurs by chance accidental. All right. I think the meeting was quite contingent, accidental meeting थी.
ऑल राइट, कि हम लोग अचानक से मिल गए इन अ रेस्टोरेंट. वेल, वी डिडंट वांट टू, बट यस, इट वाज कॉन्टिंजेंट, इट वाज एक्सीडेंटल मीटिंग, फॉर्च्यूचस, लकीली हम लोग एक दूसरे बेस से मिल गए. कॉन्टिंजेंट इवेंट. नाउ नेक्स्ट देखिए, occurring or existing only if are in case dependent on conditional. His fees were contingent on the success of his research, of his search, sorry. अब यहाँ पे देखिए, कई बार होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे कीप ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू द पीपल, सो पीपल कैन से, well, I don't know about the fee because I might get some scholarship on my tuition, I might get some tuition waivers. All right, tuition waivers क्या होते हैं? You, like the other person or the university waive your tuition fees off. All right, waive off कहते हैं ना जिसे, कि कम कर देती है, बट दैट्स क्वाइट कॉन्टिंजेंट टू द डॉक्यूमेंट्स यू सबमिट. आपका वो जो एसओपी होता है, एलओआर होता है, ट्रांसक्रिप्ट्स होती है जिसमें आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है. वेल स्टूडेंट्स, यू माइट गेट good discount on the tuition fees, but that's quite contingent on your performance. Contingent, or like on your performance, dependent or conditional based on your performance. Now next, a group of people sharing a common feature. All right, so that is also contingent. Group, body, delegation, band of people, a contingent of Japanese businessmen attending a conference. So a contingent, a group of Chinese teachers are taking some courses in India. All right. So contingent, a band of, a group of, a contingent of music, like I would say musicians or singers or performers. आपने पेंटाटोनिक सिक्स देखा होगा ना स्टूडेंट्स, एक बैंड है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है. I think recently in my group I have shared a video around it. All right, pentonics. So like a contingent of people are able to produce some musical sounds using their vocal organs. So that is contingent band. Okay, camaraderie, that is mutual trust. I think there has to be camaraderie between the soldiers or among the soldiers, friendship, complete trust, and enforced camaraderie to office life. Enforced मतलब हम एक दूसरे के ऊपर trust करते हैं, and enforced camaraderie of office life. I think the success lies with the camaraderie. So please, could you please? Thank you. All right, so that is camaraderie. Okay. अब देखिए students, next, it is the conditioning of Agniveer merit, the same, again few more words. Vindicated मतलब होता है clear of blame or suspicion. Riya Chakraborty had been vindicated by court. Riya Chakraborty जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में she was involved. All right, actually she got embroiled. I think embroiled मैंने last कुछ classes में आपके YT analysis में लिया हुआ है word. All right, embroiled, entangled, involved. All right, but then finally she had been vindicated by the court. So that is clear of blame or suspicion. Hospital staff were vindicated by the inquest verdict. All right, they were freed from suspicion. Now next देखिए flanking. Flanking के दो तीन मीनिंग होते हैं students. One is be on each other's side. The three side defendants stood in the dock flanked by the police officer. मतलब surrounded by the police officer, bounded by. All right. कहते हैं ना स्कॉट होता है आपका, and then fringed, edged by police officers. So flanked. Now एक होता है garden or strengthen a military force or position from side to side. So flanking, क्योंकि यहाँ पे military के around बात हो रही है. All right. The southern gate of the fortress is flanked by towers. Flanked मतलब guarded or strengthened. Strengthened को supported भी कह सकते हैं आप लोग. Supported by like military people. Okay. Now next देखिए students. What do you think? इसकी टोन क्या हो सकती थी? पहले तो अपन पैसेज को एक बार देख लेते हैं. अग्निवीर वाला पैसेज ये था.
Incorporating the Agniveer seamlessly into the milieu of military units is linked to unit commanders being clear about the challenges. क्या challenges है कि उन लोगों में trust नहीं रहेगा. Focus on the human element. Again, वो एक problem रहेगी. The facet of human element in the Agniveer needs to be addressed by the leaders who have been assigned the responsibility of training and assessing these impressionable minds. ऑल राइट, जो चैलेंजेस पोर्ट्रे करे गए थे उसमें उसके बारे में बात करिए. और लास्ट में फाइनली उन्होंने यहाँ पे सजेशन दिया था, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन लाइन विद द मेथोडोलॉजी यूज्ड in the selection officers or selection of officers in the military. This will help the unit commander manage the human resources available and facilitate the better grooming and assessment of Agniveers. ऑल राइट, अब आप बताओ स्टूडेंट्स कि इसकी टोन क्या हो सकती थी. व्हाट डू यू थिंक कैन बी द करेक्ट टोन अराउंड इट? कम ऑन, अ क्वेश्चन फॉर यू. ए बी सी डी. Come on, students, hurry up. I'm expecting you to answer this. Very nice. Seemingly, you all have started knuckling down. Okay, अब देखिए students, correct answer is cautionary. Obviously, because a caution is there कि चलो आपने एक रखा temporary recruitment आप कर रहे हो. All right, but there are some challenges and one needs to be, author is actually cautioning us कि क्या क्या challenges हो सकते हैं. Author has foreseen the drawbacks around it. So author is actually warning कि you have to be a little more cautious while you're recruiting people on a temporary basis. इंटरिम बेसिस. सो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉशनरी विल बी द करेक्ट टोन. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ होप्स. ऑब्वियसली इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. डिंजी का मतलब होता है सैड, ग्लूमी. डू यू थिंक इट्स द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली नॉट. सरकाजम, सरकास्टिक का मतलब होता है ह्यूमिलिएटिंग. ऑथर इज नॉट ह्यूमिलिएटिंग एनीबडी इन पर्सन. Sarcastic is more impugning the individuals. ऑल राइट, impugning मतलब अटैक करती है इंडिविजुअल्स को, उनकी इंसल्ट करना, उनको डिमीन करना. दैट इज sarcastic. Obviously sarcastic tone is not befitting in this particular passage. अब देखिए, contextual vocabulary around in a tough world the beacon of UK India strategic ties. अब देखिए इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक टाइज है, मैरीटाइम स्पेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी है. एंड आई हैव चोजन अ फ्यू वर्ड्स अराउंड इट. फर्स्ट इज वैंटन. तो वैंटन एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? वैंटन इज, जस्ट अ मिनट, deliberate and unprovoked. Deliberate and unprovoked. अब इसकी जो टेक्निक हो सकती है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपके देखिए डेलिब्रेट, अनप्रोवोक्ड, विलफुल, ये आपने जानबूझ के कुछ करा है, दैट इज वैंटन. ऑल राइट, तो ये उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. इसके एक और मीनिंग होता है, दैट इज लस्टी, लाइसेंशियस. ऑल राइट, सेक्सुअली अनरिस्ट्रेन्ड. वैंटन का एक और मीनिंग होता है. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट मीनिंग इज बी फिटिंग द क्राइटेरिया, डेलिब्रेट, अनप्रोवोक्ड, विलफुल. सो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? शेयर वांटन वेंडलिज्म, मतलब जानबूझ के तोड़फोड़ करा गया है. वेंडलिज्म क्या होता है? तोड़फोड़ होता है ना स्टूडेंट्स. ऑल राइट, आपने जानबूझ के किसी चीज को तोड़ा है, ऑल राइट, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो दैट इज वैंटन. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड इज सब्जगेट. सब्जगेट एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल. ब्रिंग अंडर, किसी चीज के डोमिनेशन में लेकर आना, अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल. ओके, दैट इज सब्जगेट. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्कर, वैंक्विश कैन बी द सिनोनिम्स अराउंड सब्जगेट.
The invaders had soon subjugated most of the population. The invaders had soon subjugated most of the population. इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया. I think Mussolini also subjugated people from Italy. Mussolini, who was considered to be a dictator, he had a good control over Italy people from Italy. All right. So Mussolini had good control. Similarly, Hitler also subjugated people in the Germany. Okay. So bring under domination or control. Now, we can also talk about the president of North Korea. He is also उसे king कहा जाता है. All right. He also subjugated. All right. Subject किसे कहा जाता है? उनकी प्रजा को subject भी कहा जाता है. तो subject आपने subjugate से याद करा. Now next देखिए students, इसके synonyms हो सकते हैं vanquish, conquer. All right. Vanquish और conquer. अब आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग सम. आइसोलेट करना मतलब सबसे अलग करना. टू मेक समथिंग अलूफ. अलूफ मतलब डिटैच करना. आइसोलेट करना सबसे सेपरेट करना. दैट इज आइसोलेशन. ओके. अब so accordingly we have learned these three words in this particular passage. अब यहाँ जो passage था बड़ा बहुत ही पॉजिटिव पैसेज था. वी हार्डली गेट सम रियली गुड पैसेजेस जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे हमें, बिकॉज नॉर्मली वी रीड न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, एंड अगर हमें नेगेटिव नेगेटिव मिलता है ना तो थ्रू आउट द डे वी कीप थिंकिंग अबाउट ऑल, मतलब द वी स्टार्ट आवर डे विद अ नेगेटिव थॉट. बट दिस वाज ब्यूटीफुल. इन अ टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रैटेजिक टाइज. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंडिया के जो मैरीटाइम स्पेस है, ऑल राइट, उसमें वी हैव गॉट अ गुड स्टैंडिंग, वी हैव गॉट बेटर अंडरस्टैंडिंग विथ लाइक दोनों के जो कंट्री के टाइज हैं दे आर क्वाइट स्ट्रेंथन, और वी आर एक्चुअली लीडिंग टू प्रोस्पेरिटी. हमारे जो डिफेंस टाइज हैं वो भी काफी स्ट्रांग है डिस्पाइट द फैक्ट लाइक यूक्रेन रशियन वॉर. उसके बाद भी हम अगर देखें यहाँ पे यूके हैड सपोर्टेड यूक्रेन कंटिन्यूअसली, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है, उसके अराउंड उन्होंने बात करी है. बट एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करी है. हिस्ट्री टीचर्स अस दैट द स्ट्रेटजीज ऑफ आइसोलेशन एंड कोहेजन हैव रियरली प्रोड्यूस्ड स्ट्रांग कोलिजन. मतलब आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो. सिंस वी आर लिविंग वी नीड टू हैव डिसेंट diplomatic relationship with others. All right, and that's what we have been here for. And इन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्योंकि यूके इज ऑल्सो ऑफ द सेम थॉट कि हम लोगों के आइसोलेशन डजंट वर्क, तो आप लोगों को लाइक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए. दे ऑल्सो एडवोकेट द सेम थिंग. सो इन दिस एवर मोर अनस्टेबल वर्ल्ड द यूके इज फॉर्चुनेट टू हैव इंडिया एज अ गुड फ्रेंड. तो पूरा का पूरा पैसेज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी the question around it. What do you think here the tone can be? Hi Mamta, I'm happy. Welcome. I welcome you, Mamta and Ajay, if you are also new to the class. I'm expecting you to continue every day because we are going to learn new tone related words. We will identify genre. We are going to learn a lot of new vocabulary as well. So I'm happy that lot many people are joining. Like Ishant is new, Mamta is new. Come on, students, hurry up. Very nice. So the tone definitely is considered to be descriptive क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमारे relations को, situations को, maritime space को beautifully describe करा है. So that is descriptive. Why not narrative, argumentative and expository? Narrative का मतलब होता है report telling. Normally the stories are reported. Okay, then something has happened, then he talked to her, she went there. So that is a kind of report telling. So जो stories वगैरह होती हैं वो reporting format में होती हैं students. So that is obviously not the correct one.
Now narrative देख सकते हैं आप लोग. Narrative basically, as I told, that it's all around reporting. Argumentative students, argumentative basically जब like people have got misconception about arguments. उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा होगा तो ही आर्ग्यूमेंट्स होंगी. ऑब्वियसली इट्स नॉट द केस. आर्ग्यूमेंटेटिव का यहाँ पे एक मीनिंग ये भी होता है कि यू एक्चुअली पुट फोर्थ योर व्यू पॉइंट, यू टेक योर ओन स्टैंड एंड थ्रू आउट यू कीप सपोर्टिंग योर व्यू पॉइंट और योर स्टैंड. आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो. दैट इज कंसिडर्ड टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव. अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं कि कॉफी, ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. All right, lot many people have this notion ki since it has caffeine, so black coffee is not good for health. Coffee is not good for health. Lot many people have got this approach, but I can justify like it increases your metabolism, it improves your if it actually helps you out maintaining your weight and it's good for liver health. So I have got a number of points to support my viewpoint, my stand that black coffee is good for health. So वो arguments होते हैं. So normally in arguments you come up with examples, you come up with factual information around it. So that is argumentative. एक्सपोजिटरी स्टूडेंट्स, जब आप किसी चीज को पहली बार एक्सपोज करते हो, जब आप किसी चीज को पहली बार रिवील करते हो, सो दैट इज एक्सपोजिटरी. सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपोजिटरी भी नहीं हो सकता था. करेक्ट आंसर चॉइस इज नो. प्लस माइनस तो एनालिसिस होते हैं अभी, वो तो एनालिटिकल टोन होती है जब आप बताते हो कि इसकी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. सो वो एनालिटिकल होती है. ऑल राइट, बट ये तो आपका आई थिंक एक्सपोजिटरी में आपको यू टेल समथिंग which is quite, which you think or the author think is not so common. Like people have got a general notion about something and you're coming up with a very different viewpoint. So वो भी आपकी disclosing and expository tone हो सकती है. Okay. डिस्क्रिप्टिव में स्टूडेंट्स वी डिस्क्राइब अ सिचुएशन. जैसे एक स्टोरी है, स्टोरी में जो सेटिंग्स है कि आपके रूम में एक काउच है, एक सोफा है, देयर वाज अ विंडो एंड द गर्ल इज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, द स्काई इज ब्लू, इट सीम्स एज इफ इट रिसेंटली रेन्ड, द बर्ड्स वर चर्पिंग. तो ये तो एक सीन का पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ. ऑल राइट. The girl was able to listen to the rustling sound of the trees. It was windy over there. So that is descriptive. Okay, that's not considered to be expository. But if I'm exposing something which is very uncommon, so that is expository. Okay. अब देखिए students, now next, the next frontier. इसके मैंने कुछ words यहाँ पर लिखे हैं. One is augment. I'll just tell you the meaning of these words before I take the other words into consideration. Augment का exactly मतलब होता है make something greater. Make something greater. इसके synonyms हो सकते हैं students: increase, augment, increase, enlarge, expand. These can be the synonyms around it. Augment. He augmented his summer income by painting houses. Augmented. I also tried to augment my salary by taking some extra classes. Augment. Okay, I'm just giving an example. I'm just giving an example. Why don't you augment your vocabulary by attending sessions on editorial analysis, literary analysis of editorials by Shazli ma'am or Sukanya ma'am? All right, students, I think high time that we all need to augment our vocabulary. I think in the morning I shared a few phrasal verbs just to augment your communication skills. So that is augment. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा अलग है, दैट इज hamstrung. Hamstrung का एग्जैक्टली मतलब होता है cripple. All right, by cutting hamstrings, cripple करना, severely restrict करना, handicap करना है किसी को, that is like cripple. Synonyms can be cripple, 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 or it can be handicap. इसका एक सेंटेंस देखिए, वी वर hamstrung by the total lack of knowledge. Crippled, handicapped
मतलब we were restrained because of the lack of knowledge. All right. We were literally hamstrung about the rules and regulations on foreign land. ऑल राइट, आप कहीं फॉरेन गए, फॉरेन ट्रिप पे, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं पता था, सो यू वर एक्चुअली hamstrung. I got hamstrung by the rules and regulations in Singapore. I had been to Singapore, so I got hamstrung. I didn't know anything about it. I didn't know the rules. I didn't know the whereabouts of the places. Hamstrung, restrained. Okay. Belligerent का मतलब होता है hostile or aggressive. That is belligerent. होस्टाइल और अग्रेसिव. तो बेली को बिल्ली से याद कर सकते हैं. बिल्ली की तरह झगड़ा करना इज बेलिजरेंट. टॉम एंड जेरी में आप देखिए, टॉम कैट हमेशा से फाइट करती आ रही है. टॉम कैट इज सो मच इनटू फाइट, सो मच इनटू लाइक aggression, कि जेरी इज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ टॉम. सो दैट इज बेलिजरेंट. तो टॉम कैट, बेली बिल्ली. ऑलराइट, बिल्ली की तरह झगड़ा करना, फेरोशियस कैट. So belligerent is jagadalu or aggressive in nature. How many of you think that you are belligerent? इसका सिनोनिम हो सकता है bellicose. तो belly बिल्ली से याद कर सकते हैं. That's considered to be a beautiful mnemonic around it. Okay, so belligerent, bellicose से भी याद कर सकते हैं. Synonym is bellicose. How many of you think that you are belligerent or bellicose? I'm expecting you to answer this. How many of you think are aggressive? Give an example around it. Red tap का मतलब होता है बच्चा, red tap is excessive bureaucracy, जिसे आप कहते हो लाल फीताशाही. Excessive rules and formalities in the government offices. I think I think why people are inclined towards privatization, why privatization is flourishing. The reason is red tape. All right. Red tape is the main reason. क्योंकि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उस प्रोसेस को वो सिंपल नहीं कर पाते और डिफिकल्ट बना देते हैं. ऑल राइट, तो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन इज फ्लोरिशिंग ओनली बिकॉज ऑफ द रेड टेप. Because in government offices, we have seen a lot of formalities, and people don't want to be adhered by all those rules, regulations, and formalities. So red tapeism कहते हैं ना, red tapeism. So red tape basically is excessive rules, regulations in the government offices. So people are literally tired of red tape, and that's why privatization is flourishing. बच्चा, प्राइवेटाइजेशन से के अराउंड आई थिंक एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी भी होती है. एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी भी होती है. लेट मी चेक. कैपिटलिज्म होती है क्या? यस, कैपिटलिज्म. सो रेड टेप, because of the red tape, capitalism is flourishing. Private enterprises are flourishing. So capitalism basically is private enterprise. ये एक philosophical term भी होता है, capitalism, and that's quite common term. You must have noticed this particular terminologies in your CLAT, mock CLATs, or the actual PYPs. Capitalism. What do you think was the tone around it? Topic क्या था? The next frontier. The next frontier passage के अंदर author has talked about space exploration, and author has also mentioned कि अभी तक ये government के control में था, but even other people like private industries are also taking active participation in that. And उसके around कुछ suggestions भी author के थे. I'll just check. Just a minute. The
The decision India gives the ability to take advantage is less vitiated foreign ties to catch up with China's more advanced position as a space power. Okay. Against this extended, new investment can add to India's space economy by improving startups' access to talent and capital, effecting better balance. Finally, to sustain these winds of change, the government must keep regulatory environment clear, reduce red tape, increase public support, and ease Indian companies' ability to access foreign market. तो यहाँ पे लास्ट में कुछ अच्छे सजेशंस भी थे. ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि व्हाट कैन बी द टोन अराउंड इट. Come on, tell me what could be the correct tone here. Argumentative, I have just explained. Argumentative has got nothing to do with वो जो heated arguments होते हैं. It's just like you come up with your point and then you try to explain that. That is argumentative. Pensive, correct tone is pensive. Pensive का मतलब होता है thought provoking. So author has come up with a point कि it's going great, and then author has suggested a few things. Author has given us food for thought कि इसको और अच्छा बेहतर अपन कैसे बना सकते हैं. Admonishing नहीं होगा. Admonishing का मतलब होता है to scold or warn of a fault. That is admonishing. All right, to scold or warn. So I think our parents, they keep admonishing us every now and then. The teachers, they also keep admonishing us every now and then. Expository is disclosing, revealing for the first time. So that's not something जो कि we consider कि ये पहली बार ही reveal हुआ है. So that's not the expository as well. नाउ द लास्ट वन डिसेंट वाला जो था उसमें दो ही वर्ड्स थे बच्चा जो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. वन इज एग्जाइल एंड देन द अदर वन इज डिसेंट. यहाँ पे वो जो पैसेज था उसमें आई थिंक नेवेलनी वाज द पर्सन जिनका नाम यहाँ पर इसमें दिया हुआ है. यस, नेवेलनी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये लाइक एंटोगोनिस्ट थे एंड वो बिल्कुल भी पुतिन की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको सपोर्ट नहीं करते थे. ही वाज इन प्रिजन, फाइनली ही वाज किल्ड. तो जो उसकी वाइफ है यूलिया नवेलनया सेड मिस्टर पुतिन किल्ड माय हस्बैंड एंड वोट टू कंटिन्यू हिज फाइट. उसने कहा कि भाई मैं इसकी इनके साथ अब ये जो झगड़ा है फाइट है आई विल कंटिन्यू विद इट whatever the reason for his death. the रशियन स्टेट कैन नॉट सॉल्व. मतलब उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से पुतिन की टोटलिटेरियनिज्म है या अथॉरिटेरियनिज्म जो उसकी है कि कंप्लीट अथॉरिटी कंप्लीट कंट्रोल है, इस तरह से रशिया कैन नॉट ग्रो. एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि रशिया की जो हिस्ट्री रही है दैट इटसेल्फ सजेस्टेड कि जो रशिया की अभी करंट सिचुएशन है दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस. उसके बारे में इन्होंने पैसेज में बात करी है बच्चा. So there were, I could find only two words around this. One is exile, as I told, and another one is dissent. Dissent कौन होते हैं बच्चा? The people who disagree, dissenters. Dissenters जो आपको oppose करें. All right. The person who dissents. All right, dissenter, a person who oppose official policy. Dissent कौन होते हैं? A person who oppose official policies, especially that of an authoritarian state. उसे dissent कहा गया है. A dissentant who had been jailed by military regime, a dissentant. Okay. अब exile देखिए स्टूडेंट्स. exile का मतलब होता है किसी को बैन कर देना. exile is banishment. All right. जैसे your Lord Ram, he was also exiled from Ayodhya. All right, he was also exiled from Ayodhya. So exile जब आप किसी को कहीं से banish कर दें, ban कर दें, बार कर दें. All right, so that is exile. चलिए
सो इसकी टोन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? एग्जाइल देश निकालना भी होता है, और एक एग्जाइल का तो एग्जाइल मतलब कहीं से किसी चीज को, किसी को बैन कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाइल. वेरी नाइस एग्जाम्पल वैभव. गुड. Somber का मतलब होता है dull and dry. The tone is not dull and dry. The tone is rather gloomy, pessimistic. All right, I'll explain all the words. So the correct tone is pessimistic. देखिए fastidious का exactly meaning क्या होता है? Fastidious मतलब होता है you pay attention to the minute details. That is fastidious. Pay attention to the minute details is fastidious. I'm writing paying attention to minute details. Acrimonious is harsh, bitter, caustic. Pessimistic is hopelessness, hopeless, or full of despair. Hopeless or full of despair. Somber, dull, dry, boring. तो ये डल ड्राई बोरिंग तो नहीं थी. इट्स रादर डिपिक्ट्स होपलेसनेस, कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. दिस वेज रशिया कैन नॉट फ्लोरिश. It's giving us a picture very which is very gloomy, dingy, that somebody who was against Putin, he has been killed. All right. So that's the correct tone, pessimistic. I hope you have gotten a decent learning in today's session. I really appreciate if you can write down कि कितने words आज आप लोगों ने याद करे थे in this session. You must have written somewhere, and whatever you have learned so far, I'll just show it to you once again. Please do frame at least one sentence in the comment section, or even here. How many words have you learned so far in today's session? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So around 30 words, including the tone words. So we have learned around 30 words in today's session. I hope you had decent learning, and I really appreciate if you can frame one sentence in the comment section afterwards. Thank you so much, students. God bless you. Bye-bye. Take care. Bye, bacha. Thank you. Thank you so much for being so regular. Chalo, bye.